Assalamu alaikum and welcome to I Am Her with Sidra Iqbal. In this series, of course, we have a fantastic guest each time जिनसे हम बात करते हैं किसी particular feminine energy and feminine leadership trait के बारे में. आज की हमारी chosen trait है, of course, confidence. अगर आप अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं, अपने ख्वाबों को हकीकत बनाना चाहती हैं, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा अहम है आपका confident होना, पुरएतमाद होना. And our guest today has oodles of that. And this has really carried her places. और आज हम उनसे बात करेंगे उनकी जर्नी के बारे में. We have none other than the very amazing Faiza Saleem with us. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. I feel like I should clap right now. Why? ऐसी इतनी भावुक हो गई आप अपने इंट्रो से. खुश हो गई थी, कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ. क्या बात है. लेकिन कॉन्फिडेंस की तो कभी भी कमी नहीं थी. Faiza, not a lot of people know. Yes, they know you through your work and the amazing content that you create. And I call it amazing for a reason कि हमारी जिंदगियों में इतने दुख हैं, इतनी परेशानियां हैं. लेकिन मुझे पता है कि अगर ब्लैकआउट हो या कोई भी मसला हो जाए, पूरा शहर अर्बन फ्लडिंग से बंद हो जाए, इनके कंटेंट पे जाके मेरे दिल में एक दोबारा खुशी की उमंग आ जाती है. But not a lot of people know that you started with law. You've actually read law. Yes, I have. And did you practice law? I For a year practiced you for did. about a year. Huh. And then, I mean, I don't know how many people know the entire story or if you want me to delve into it or not. But then I was always doing theater and stand-up and improv on the side. But obviously, I studied law. So I had to pursue it as a career for a little bit until I just couldn't. But yeah, sometimes people get very surprised. Like, lawyer, are you sure? Did you So practice? Faiza, did you always have a sense of humor? क्योंकि आपकी जो comic timing है, you are a class apart. और ये कई लोग कहते हैं ना खुदा की तरफ से होती है. Yeah, you had to work on your timing. How did the journey begin? Timing, I would say, was God-gifted because timing is a little bit tough to work on. But I would say acting and what kind of acting suits what medium, that's something that I learned along the way. Sahi. Theater, for example, acting is very like over the top and very exaggerated, especially comedic acting in theater. Whereas on social media, the same thing looks too much. You know, To OTT. to OTT, a little bit annoying as well. I would go as far as to call it annoying, you know, because it's like you're loud and you're like out there. But वो theater पे उसकी live जो audience के साथ जो feel होती है, it's very different. And when you're watching it अपने छोटे से screen के ऊपर and somebody is just like, you know, all over the place. Yes. तो वो मुझे time लगा figure out करने में, you know. And then TV का एक और ही तरीका है, even sitcom का, even comedy on different platforms and different mediums is very challenging in its own way. But you've been a pioneer in your own right. I mean, if I look at it, having an all-women troupe, a comedy troupe, was never thought of in Pakistan. कई लोगों ने सोचा होगा शायद, लेकिन हिम्मत किसी ने नहीं की. आपने ये कैसे सोचा? And how did you find that band of like-minded, amazing women? Oh my goodness, I cannot emphasize enough on how amazing the women are. And I'm so glad. They're so different from each other and from me, but yet, you know, we connect in a way that I would say I do not connect with a lot of my own friends from my childhood as well. You know, I mean, उनकी अपनी अलग जगह, obviously they're like amazing and उनके साथ तो वो आपका एक time के साथ bond grow होता है. बिल्कुल. ये जो 6-7 ख़वातीन हैं ट्रूप के अंदर ना, we come together and it's all like, you know, fun and laughter and like-mindedness in a very different way. I can't explain. When you meet each one of us, you won't imagine us being friends with each other, you know. But when we come together, it's just very, very different अच्छा, एक from बात बताओ सच्ची anything else. कि जब आप लॉ की बात करते हो, being a lawyer, एक impression है कि lawyers make a lot of money. Yeah. You had a passion for comedy. How did you monetize it, भाई? भाई पहले तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं था दैट कॉमेडियंस और लाइक इन्फ्लुएंसर का टर्म ही शायद कोई नहीं हुआ था. एटलीस्ट पाकिस्तान में तो कोई किसी को इन्फ्लुएंसर नहीं बोलता था ना. मैंने तो नहीं सुना था. इन्फ्लुएंशियल बोलते थे. इन्फ्लुएंशियल होते थे, इन्फ्लुएंसर नहीं होते. बट उस वक्त ना पैसे कमाने का इसके थ्रू कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. और यस, लॉयर्स, गुड लॉयर्स मेक अ लॉट ऑफ मनी. But also good comedians and good influencers make a lot of money now. Right. But initially जब था ना तो I didn't know कि क्या होगा. There was no concept of making any money off of this. तो वो बस चलते चलते I realized that if you want to pursue your passion तो आपको थोड़ा सा उसके साथ like, you know, you have to make it sustainable in the sense that you should be making money off of it because वो फिर long term में करना मुश्किल होता है. इतने सारे लोग होते हैं वो साइड में अपना passion follow करते हैं because उससे वो कमाते नहीं हैं. So they have to hustle
and do something else Yes. while they they ये एक carry on with पैशन it. है और ये जरिया आमदनी उसको हमने अलग अलग किया हुआ था बट नॉट अ लॉट ऑफ पीपल नो कि क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आपको जिस तरह के पता है दिस इज ब्रॉट टू यू बाय JS Her and your first ever bank account was also JS Bank. Yes. How cool is that? I'm not making this up, by the way, किसी को लगेगा ऐसे JS पे आके बोल रही है. But when I was working for Manzil, I don't know if can I name them? Of course. Okay. So when I was working for Manzil, which is a public policy think tank, their employees had all their bank accounts, like their salary accounts at JS Bank. And that's where I got my first bank account. Otherwise, I had a joint account with my mother in another bank, but JS was my first like independent bank account. Let's talk about stereotypes a little bit, Faiza. आमतौर पे तुम कॉमेडी करते हो, you are amazing at what you do. But did you have to face a lot of stereotyping? लोगों को लगा कि हाँ जी, she is bubbly, she can make fun of things, social commenting भी करती है. किसी तरह पे तुमने अपने image को boxed in पाया? हाँ, इनफैक्ट मैं लोगों से पूछती हूँ ना, लाइक व्हेन पीपल आस्क मी कि यू हाउ हैव यू ओवरकम योर हर्डल्स, आई से द हर्डल्स आर ऑनगोइंग, अभी भी बहुत सारी टाइप कास्टिंग होती है, अभी भी बहुत सारा लाइक आई हैव टू पावर थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स. एंड इनिशियली ऑल्सो लाइक मुझे होता है मुझे किसी भी बॉक्स में ना, चाहे वो कॉमेडी का बॉक्स क्यों ना हो, उसे बंद ना कर दो, लेट मी आउट ऑफ दैट बॉक्स एंड लेट मी ट्राई अदर थिंग्स. तो मेन स्ट्रीम में बड़ा मुश्किल है लोगों के लिए. वो होता है एक वन ऑफ, किसी ने बड़ी सी कोई एक नई चीज कर दी तो उन्होंने कुछ डिफरेंट ले आए, फिर वो वही जो है वो कंटिन्यू नहीं करते. सो वन ऑफ चीजें बहुत होती हैं टू मेक अ स्टेटमेंट इन दिस इंडस्ट्री, बट लॉन्ग टर्म कुछ भी नहीं होता. देयर इज नो, अगर आप मुझसे पूछो कि मेन स्ट्रीम मीडिया में एक्सेप्टेंस है अभी भी इस काम की, इन चीज़ों की, तो आई वुड से नहीं, खास नहीं है. सो एवरीवन हु मेड अ मार्क फॉर देमसेल्व्स हैज made it independent of any TV channel or directors or anybody else. उन्होंने खुद किया है. तो वो अभी भी चलता है. And they see you as, if they see you as a comedian, if they see you doing comedy, तो आप उसी उसमें बन जाते हो कि आप कॉमेडी कर सकते हो और आप सर्टन टाइप की कॉमेडी कर सकते हो. और मोस्टली ये होता है that the women are the joke as opposed to being the ones to crack jokes, and this is a huge problem I have. कुछ कल्चरल भी रहा है. If you remember, we were all 90s kids, तो हमें याद है हमारे घरों में दावतों में there were a lot of dad jokes. There were a lot of, okay, let's make fun of my wife jokes. And it was just, you're right, the pun or the bottom line was, the joke was the woman. How did you change that? That is exactly what I wanted to change when I started initially. बहुत सारे content creators उस वक्त थे, mostly abroad, who would make fun of women gossip, women are jealous of each other, women are like this, women are like that. Or show like, people are all, like, we have all sorts of people. All over the world. तो आप किसी को नहीं बोल सकते ये है, इसको इस बॉक्स में डालो, उसको इस बॉक्स में डालो. And I felt that वो content जो थी ना was mostly centered around making fun of women. Sure, like ठीक है, आप थोड़े बहुत quirks बन के pick up कर लो. But not everything is, कि women gossip and women are jealous of each other and they, possessive and this and that. So I felt like वो narrative जो है ना, like a woman's side of the story was never told. So I tell like the female side of things. I tell about people who don't necessarily speak, on their own. Very true. So I mean that was the whole idea कि ये बस हो गया, बस ये सबने कर लिया ये, and we laugh about it, and it's so common. मुझे बड़े condescending लगता है वो wife joke जो हर वक्त कर रहे होते हैं लोग, and it's just like insulting the wife. Exactly. And insulting अच्छा, फिर उसके बाद क्यों में खुद ही हंसते हैं ताकि आपको पता चले कि अब यहाँ पे हंसना है. अब यहाँ पे हंसना है. और मुझे बचपन में ना नहीं फनी लगते थे. उस वक्त तो वो कल्चर भी नहीं था इतना. सो अब तो वो कल्चर बहुत हो गया है. ट्विटर आर्टी बहुत एक्टिव हो चुकी है, but उस वक्त वो कल्चर नहीं था. उस वक्त like But whatever. doesn't that complicate your job, Faiza? I mean, पहले जब कोई रूल्स नहीं थे और आप हर चीज़ का मजाक उड़ा सकते थे, लोग इतने सेंसिटिव भी नहीं थे. आज जब लोगों में ये अवेयरनेस आई है कि किसी की डिसेबिलिटी का आप मजाक नहीं उड़ा सकते, किसी की रंगत का, किसी के साइज का आप मजाक नहीं उड़ा सकते, तो कॉमेडी करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है? एक तरीके से ज्यादा मुश्किल है ना? एक तरीके से ज्यादा मुश्किल है, but I've always tried to be mindful of my comedy. I want people to laugh with me, but I do not want to laugh at people with my comedy. Very true. So if you notice, I'm a little bit neutral, especially on social media. I've tried to stay away from all kinds of isms. I've tried. And sometimes as a comedian you do fail at that because comedy does come from a dark place. So बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी. लेकिन मैंने क्योंकि पहले से कोशिश करती थी तो मेरे दिमाग में अभी भी वो फिल्टर है. बट आई फील और ज़्यादा वो एक्सट्रीमिज्म जो है ना हर तरीके का
हर जगह से आ रहा है, तो वो एक छोटी सी भी बात को लोग पकड़ के उसको वो बहुत बड़ा बना देते हैं कि ओ ये फनी नहीं है और ये कैसे कह दिया। और मुझे होता है कि ये जो वोक लोग हैं ना, अक्सर उनको मैंने पर्सनल लाइफ में खुद भी देखा हुआ है। हाँ। वो आके इंटरनेट पे तो बहुत बातें करते हैं स्टफ, लेकिन वही बायसेस उनकी अपनी जिंदगी में वो होते बायसेस अपनी जिंदगी में होते हैं, बिल्कुल। आके बड़ी बड़ी बातें करना एंड हरकतें छोटी छोटी करना रियल लाइफ में, और इंटरनेट पे आके बोलना कि ओ तुमने ये गलत किया। हाँ। तो आप अपनी लाइफ में आपका क्या एटीट्यूड है लोगों के साथ, आप अपने आप को देखते हैं, आई मीन I'd go as far as to say that some people, they're feminists on the face of things, but आके आप अगर अपनी जिंदगी में प्रोग्रेस कर रहे हैं तो वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, they'll try to put you down, मे बी आपका पत्ता नहीं काटने के सेंस में, बट लाइक फॉर एग्जाम्पल आई शेयर एन अचीवमेंट ऑफ माइंड, उस पर कोई स्लाइड से रिमार्क कर देना और कोई ऐसा रिमार्क कर देना तो ओ वी वर जस्ट किडिंग, और ओ वी डिडंट मीन टू से इट लाइक दैट, आई थिंक समटाइम्स हमारी सोसाइटी में लोग तब तक सपोर्टिव होते हैं कि जब तक आपकी स्ट्रगल चल रही है, अगर थोड़ा सा वो स्ट्रगल से बाहर आ गए, when they can't be your heroes, then they have a problem with And you. that is why they say कि please be mindful of who are the people who are applauding you and encouraging you when you're making your mark. उनको जरा गौर से देखें, they're your true tribe. लेकिन one of the cutest things that you've ever done, Faiza, and I go back to your wedding day, जब तुमने अपनी मेहंदी पे you decided to wear sneakers and have fun and dance along. Was this to make a mark, to prove a point, or it was just you Nothing at all. unapologetically? Sidra, the bar is so low for women कि हर चीज becomes, oh she's broken a stereotype, oh she's crossed barriers. I think इतने बैरियर खड़े क्यों किए कि इतना से जूते पहनने के ऊपर बैरियर टूट रहा है, हील नहीं पहनी तो बैरियर टूट गया, लाइक मुझे ये होता है कि नहीं, और किसी ने लिखा हुआ भी था कि ओ trying to make a statement and stuff. I was like, no, I'm not. I live my life exactly the way I want to, even जब कोई कहता है ना कि oh my god you're so brave, you're so confident, I'm like बस मैं अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार रही हूँ, व्हाट्स सो ब्रेव एंड कॉन्फिडेंट अबाउट दैट, बट बिकॉज इतना बार इतना लो है कि वो बन जाता है, अच्छा शी इज ट्राइंग टू मेक अ स्टेटमेंट, शी ट्राइंग टू प्रूव अ पॉइंट, आई एम नॉट, आई एम जस्ट लिविंग माय बेस्ट लाइफ एंड इट बॉदर्स सो मेनी पीपल. How easy is it? I must ask you, in Pakistan, अपनी जिंदगी अपने शर्त पे जीना, और ख़ास तौर पे जो प्रेशर्स दुनिया लेती है, शादी का प्रेशर लड़कियों पे बहुत है, या फिर वजन या दिखना एक तरह से है, कभी किसी इस तरह का प्रेशर लिया फ़ायज़ा? दिया बहुत लोगों ने, हर तरफ से हर किस्म का प्रेशर आता है, बट मैंने कभी किसी ब्रांड ने कहा कि फ़ायज़ा हम आपको ब्रांड एम्बेसडर ले लें, बस जरा वजन थोड़ा कम कर? नहीं, ऑनेस्टली ये नहीं कहा, नहीं, हिम्मत ही नहीं हुई होगी। नहीं, क्यों नहीं, हिम्मत नहीं हुई, या पता नहीं उन्होंने सोचा कि भाई अब अच्छा नहीं लगता ऐसी बातें करना, आई होप यही बात हो. But I work with a lot of brands, and I'll say this much about the brands that I have worked with, because even off camera I was saying that I don't like to tell stories which are not true, or I don't want to endorse things which I don't personally have any connection with. So whatever, almost like 95% of the brands that I've worked with, they worked with me because they like me, they like my brand, and they have the same values as me, if not always, then most of the time. तो ये नहीं हुआ कि किसी ने मुझे बोला, हाँ लोगों ने टीवी फिल्म के बारे में मुझे बोला कि आप वेट लूज कर लोगी तो फिर आप मेन स्ट्रीम कर सकती हो, ये वो. आई थिंक मेन स्ट्रीम इज सो ओवररेटेड. क्यों मैं करूंगी when I can be my own boss elsewhere? Sure, I like to challenge myself, which is why I'm doing television. लेकिन ये ब्रांड्स का नहीं की तरफ से नहीं आया, बट जनरली लोगों की तरफ से आता है कि वो तुम ड्रामों में क्यों नहीं आती, वेट लूज कर लोगी तो ड्रामों में आओगी, फिल्म में ज्यादा अच्छे रोल्स मिलेंगे, and all of that. But congratulations on getting your first fashion cover. I think this is a brilliant start to 2023. January का Women's Zone का cover देखें, Faiza looks ravishing as a beautiful bride. Were you tensed about this one? No, I wasn't. You weren't? I wasn't. हाँ, नहीं, because वो again it was different from what you've done ना. Body of work में कभी fashion modeling नहीं थी, वो भी bridal shoot नहीं था. Fashion modeling I've done, but bridal shoot नहीं किया और cover shoot नहीं किया मैंने. Fashion like I said, fashion modeling भी जिन ब्रांड के साथ मैंने की है ना, उनमें से किसी ने नहीं बोला कि अच्छा आपको हमने उसमें लेना है, बड़ी कैंपेन आ रही तो जरा थोड़ा वो कर ले, कभी भी नहीं किया. But I wish, generally speaking, that brands, they don't take plus size women or women who don't fall into like a conventional category of beautiful or charming or attractive. उनको वो as a one off ना ले, उनको consistently अपने campaigns का हिस्सा बनाए, normalize कर दें. अभी तो बड़ा celebrated होता है ना कि अरे
they showing Inclusive हैं हम। inclusive है। Yes. हम आपको भी लेंगे। हाँ, not आप like भी that. आ जाए, आप भी आ जाए। हम भी आ सकती है, like point proving Isn't उसमें it शायद हो great? जाती है। I mean, I love the fact कि हम आज के ज़माने में जी रहे हैं, फ़ायज़ा। हाँ। So many more opportunities opening up for us. Of course, and है ना? I'm happy about that. But I feel कि अब normalize हो जाना चाहिए. It shouldn't be like, oh, यार हम ये कर, look at us. अच्छा, we're let's so good. talk money because this is हाँ, after all yeah. JS Hub. मुझे ये बताओ कि बहुत सारी ख़वातीन इस पे struggle करती हैं कि even when they know they're worth it, they can't name their price. और उसके बाद भी जब वो उनसे haggle किया जाए, negotiate किया जाए कि नहीं जी पैसे इतने नहीं है फलाना दिमागा, they cave in. How do you handle money? I handle money contrary to popular belief. I handle it well. I believe in savings. बहुत दफ़ा ये होता है that if you're making a good amount of money, you think अच्छा चलो हम ये भी ले लेते हैं या अपनी उससे बाहर चले जाते हैं बजट से बाहर कि भाई चलो कर लेंगे. So I don't believe in that. I believe in savings. I believe in making sure that you are secure and independent. सही. Independent of your family, whether it be your father or your brother or your husband. वो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है. And independent financially होने का मतलब होता है कि आप तकरीबन और इलाकों में भी, एरियाज में भी आप इंडिपेंडेंट हो. So I do feel के सेविंग्स अकाउंट सबके पास होना चाहिए, सबके पास अपना इंडिपेंडेंट अकाउंट होना चाहिए, नॉट जॉइंट अकाउंट विद फैमिली. और एंड दिस इज व्हाई आई आल्सो लाइक JS एज अ बैंक, बिकॉज JS हर का इनिशिएटिव जो है, आई थिंक इट हेल्प्स अ लॉट ऑफ पीपल हु डोंट हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बैंक्स, ये बैंक अकाउंट कैसे खोलते हैं. सो with JS Her, even like somebody who's domestic staff or not aware of how to open up a bank, उनके लिए आसानियां हो जाती हैं. प्रोसेसिंग फी पर इतना डिस्काउंट है. सो वो होता है ना कि अच्छा हम कैसे खोलें, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, वो सारी चीज़ें एलिमिनेट हो जाती हैं, which is very important. मुझे याद है एक ज़माना था, because I have spent some time being a current affairs anchor as well, and I love being involved with political commentary. हमें ना हालाते हज़रा का जब प्रोग्राम आता था तो वी यूज्ड टू थिंक ये अंकल्स और बाबा का प्रोग्राम है, ये हमारा आवर नहीं है. एंड लाइकवाइज व्हेन इट कम्स टू मनी मैटर्स, बैंकिंग एट वन पॉइंट इन टाइम हमें लगता था कि घर का कोई मर्द इन चीज़ों को देख ले, भाई देख ले, मे बी योर हस्बैंड कैन टेक केयर ऑफ दोस चोर्स, बिल जमा कराना है. बट नाउ आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ बीइंग एन एडल्ट कि यू शुड डू दीज थिंग्स ऑन योर ओन, है ना? हाँ, और हर किसी को ज़रूरत है ना करने की. हर किसी के पास अब पैसे हाथ में आते हैं, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो वर्किंग वुमन हो, एनीबडी एंड एवरीबडी इज डीलिंग विद मनी. सो बैंक अकाउंट होना का ना होने का कॉन्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए. एंड हाउ हैज लाइफ चेंज सिंस यू हैव गॉटन मैरिड? आपको क्या लगता है कि जॉइंट फाइनेंसेस मैनेज करना ज़्यादा आसान है या इंडिपेंडेंटली मैनेज करना आसान है? दोनों. फाइनेंसेस जनरली मैनेज करना मुश्किल है आजकल के ज़माने में, क्योंकि महीना खत्म हो जाता है, पैसे खत्म हो जाते हैं. फाइनेंसेस हो तो मैनेज करें, बट थोड़े बहुत जमा करते हैं तो हम फिर छुट्टियों पे निकल जाते हैं. छुट्टियों पे निकल जाते हैं. आर्टिस्ट की तो यही जिंदगी है. क्या करें भाई, फ्रेश रहना भी बहुत जरूरी है. हाँ, बट वो नहीं होना चाहिए सिद्रा के जो कमाया वो खा लिया. वो वाली अप्रोच नहीं होनी चाहिए आइडियली. अगेन आई कम फ्रॉम अ प्रिविलेज्ड व्यू पॉइंट, सो आई कैन से दैट. बट जितना भी कोशिश कर सके, no matter how little or how much you're earning, savings are extremely important. Always think of like worst case scenario. मैं बड़ा मेरी जिंदगी में मैं कभी कोई भी सोचा कि इतने पैसे मिस्टेक हो, but worst case scenario कभी भी बुरा वक्त आ सकता है. So you need to be financially independent, be aware of what to do in a situation where एकदम से कोई calamity आ गई, कुछ आ गया, financial इनसिक्योरिटी आपको किसी किस्म की फेस ना करनी पड़े. उस सूरत में आपको अपना हमेशा बैकअप प्लान होना चाहिए, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो. And money is no joke, guys. We may be making fun of a lot of things in life, but being sustainable, having a lifestyle, livelihood, आपकी savings in place, investment in place. एक बड़ी mistake जो लोग करते हैं कि जो बच जाता है उसको save करते हैं. I think if you really want to up your savings, पहले save करें और फिर बाकी चीज़ों को आप खर्च करें. अच्छा, on a more philosophical level, what actually tickles the funny bone when it comes to Pakistani nation? हमें किन चीज़ों पे हंसी आती है? हमें उन चीज़ों पे हंसी आती है जिनके बारे में मैं एक्चुअली दिल में बुरा लग रहा होता है, लेकिन हम कह नहीं पाते. बहुत दफ़ा काफ़ी ख़वातीन मुझे मैसेज करेंगी, they'll tell me that this person did this to me, or like a family member, or like ससुराल हो गया, मैं जो भी कोई किसी ने मुझे बात बोली थी, and I couldn't respond to them, or I couldn't tell them that this is rude, लेकिन because of your video I could convey the message.
अब आप टैग कर देते हैं, कोई आप और टैग बना कर देते हैं, आप शेयर कर देते हैं, आप किसी को वो टैग ना भी करो, आप शेयर कर दो, तो बहुत सारी चीजें वो उन चीजों पर मैं कमेंट करती हूँ कि जो कि मुझे भी पर्सनली भी बुरी लगती हैं। अच्छा, कभी कभी मुझे बताओ, तुम रिश्तेदारों का भी मजाक उड़ा देती हो, बड़े इंटीमेट, पीपल स्टार्ट इमेजिनिंग कि अच्छा फायजा के घर में शायद ऐसी होता होगा, उसकी अम्मी ऐसी हाँ है, हाँ, मेरी अम्मी इसके तो बोला हस्बैंड ऐसी हैं, लोगों को लगेगा मेरे बारे में वीडियो बन चुकी है। तो ये हैव दे गिवन यू अ रिएक्शन? कभी कभार किसी ने कहा भाईजान कुछ भी करो मेरे पे वीडियो नहीं बनाना, कभी ऐसा हुआ? हाँ, like once I made a video about people like when they're traveling abroad, तो वो कैसे like और बहुत कॉमन है कि कोई फरमाइशी वगैरह स्टार्ट कर देते हैं वो, तो इस कैटेगरी की बात थी, नॉट मे बी नॉट एग्जैक्टली ये नहीं हुआ था, बट समथिंग टू दिस इफेक्ट, एंड माय सिस्टर वाज लाइक मैंने एक ही चीज बोली थी, शी कॉल्ड मी अभिषेक, मैंने एक ही चीज बोली थी, तुमने वीडियो बना दी है, लाइक नहीं भाई, लाइक दिस हैपेंस सो मच कि कोई जा रहा है तो उसको बोलते हैं ना ये कर लेकिन लेना। वैसे एक बात कन्फेशन है, मैं तो कन्फेस करने के लिए तैयार हूँ, मेरे मॉर्निंग शो में बहुत सारी सोशल सिचुएशंस जो आप देखते हैं, मेरे घर वाले कंटेंट क्रिएटर्स हैं, मैं वहीं से अपना सारा मवाद इकट्ठा करती हूँ, बहुत सारी सिचुएशंस हमारे घरों में हो रही होती हैं। Exactly, na. I mean, Sidra, if you're watching something and enjoying it, then you know that it happens with you or around you, right? अगर मेरे अपने घर की कहानी होगी तो like आपको क्या आप रिलेट नहीं कर पाओगे, आप एंजॉय नहीं कर पाओगे, तो मैं यही बोलती हूँ पर्सनली कोई भी नहीं ले, किसी एक बंदे की नहीं होती, ये हमारी सोसाइटी के ना कोई काफी सारी चीजें हैं जो हर घर में होती हैं और हर किसी को ऐसे लोग मिलते हैं। But I must compliment you and I must put this on camera कि you have a brilliantly supportive spouse and the way he supports you and he's been such a great sport, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके अक्सर वो जो कहते हैं ना bottom line the pun is him, but he just rallies with you and we want to know, we all want to know, how did the two of you meet, by the way? We were in uni together and we were the best of friends, और वो कुछ कुछ हो जाए देखिए, हाँ, वो फिर लेकिन उसमें मैं थोड़ा सा रानी मुखर्जी थी, ट्रेजेडी नहीं रानी मैं वही सोची थी, गलत एग्जांपल दे दिया। उससे बस ये चीज निकाली कि प्यार दोस्ती है, बट नथिंग एल्स, अल्लाह का शुक्र है सब सेट है, but we were friends and we were very platonic friends and then we ended up getting together eventually. Like who said, who proposed? Abu sir, obviously. Abu sir, of course. और आपने कितना टाइम लगाया हाँ कहने में? थोड़ा टाइम लगाया, ज्यादा टाइम नहीं लगाया, बट शादी तक पहुंचने पे और लाइक लॉन्ग टर्म करने पे टाइम लगाया हमने, लेकिन we were so close के, and he's not just supportive, he's my partner in everything. Yes. And we just like I tell people he's a bit of an introverted version of me. Same चीज है, same sense of humor है, same हर चीज है, same बहुत similar likes and dislikes हैं, jokes भी हमें एक ही टाइप के पसंद आते हैं, so माशाल्लाह like now that we've started working together इतना appreciation मिलता है that I feel like ये तो हमने पहले कर लेना चाहिए था, but अभी 2 साल से we've been working together as well. Mashallah, you guys make a great couple. And in fact, as we wind up this conversation, I would love for you to give some advice to our viewers, primarily women, कि जो struggle करती हैं confidence के साथ. हम में से हर एक शख्स की कोई ना कोई insecurity होती है और उनको शायद लगता हो कि यार इस insecurity की वजह से मेरा ख्वाब कभी सच नहीं हो सकता. What would your advice be to them? Just that insecurities जो है, आपको लगता है कि आपके अंदर कोई कमी है या आपके अंदर कोई चीज़ ऐसी है जो दूसरों में नहीं हो, आपको कभी कभी नजर नहीं आती. Every single person has their own struggles, but आपको अपने struggles के बावजूद चलते जाना है, बस चलते रहो. That's what I keep telling people. I also don't know, अभी आप मुझसे कभी पूछते हैं ना कोई 5 साल बाद वीडियो, I don't see myself anywhere, to be honest. अगर मैं सच बताऊं, I just see myself getting along, on a lighter note, आजकल फायजा अपने steps भी count कर रही है, तो बस चलते रहो. हाँ, चलते रहो, ये बिल्कुल actually चल के 10,000 steps तो कर लो. और उसके बाद सोचो, उसके बाद आप वो जो milestone achieve हो जाएगा और ट्रॉफी बनी हुई आएगी ना, so that is going to be all the appreciation. And don't wait for miracles to happen कि ओ ये हो जाएगा. Like मैं 10 साल से काम कर रही हूँ, and people like ओ एकदम से ओ cover पे भी आ गया, ये आ गया, वो आ गया, इतनी चीजें हो गई. I'm like बस I powered through all the issues. मैं अभी भी जाती हूँ, मुझे शूट पे कभी कोई प्रॉब्लम होती है, कभी मुझे काम मेरे कभी कोई तकलीफ है, कभी कोई इशू है, कभी छोटे मोटे प्रॉब्लम जो कि जिंदगी का हिस्सा है, वो चलती रहती है, बट यू जस्ट push through. You like whatever, ना इधर देखो ना उधर देखो, बस आगे देखो, चलते रहो. How brilliant, how profound, and how inspirational. Thank you so much, Faiza, for being here. You're a breath of fresh air. I don't need to say that. It's always amazing to have a conversation with you. लेकिन साथ साथ जो बात है ना कि a journey of 1,000 miles begins with that first step. And that first step could be anything. आपको नहीं पता कि आपका idea या आपका business plan sustainable कैसे होगा. But that should not stop you. Maybe for now, just go and head to a JS Bank and find out all about how to open your account. Maybe that could be your first step. If you want more information,
leave a comment. Somebody in our team is going to get back to you. But thank you once again, Faiza, for Thank being you, here. Sidra, for having me. You are amazing. Shukriya. One round of Shukriya, applause for you as well. एक मैंने अपने लिए कर दिया था. Thank you. But And you're with that, amazing. ladies and gentlemen, अगर आप इसको live देख रहे हैं, हमें ज़रूर बताइए आज की conversation में what landed with you, what bit did you not know about Faiza, and what really hit your heart. और साथ साथ अगर आप इसका replay देख रहे हैं, so please include #replay and let us know what you think about that. Until next time, take good care of yourself. खुदा हाफिज़.